हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अंडर एक्टिव थायराइड्स होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड डजंट प्रोड्यूस इनफ T3 एंड T4। इसमें थायराइड ग्लैंड्स इनफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं T3 एंड T4 को। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ हैं, प्राइमरी कॉजेज़ होंगे और सेकेंडरी कॉजेज़ होंगे। प्राइमरी मेनली रिलेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से एंड सेकेंडरी मेनली रिलेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो प्राइमरी हम देखेंगे, प्राइमरी ऑटो इम्यून की वजह से होता है, जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस और APS1 एंड APS2। APS मीन्स ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम and iron deficiency also like endemic goiters and because of some medications like lithium and amiodarons and in secondary जैसे मैंने बताया ये रिलेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो इसके हो सकते हैं ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस और वैस्कुलर पैथोलॉजी। वैस्कुलर पैथोलॉजी वी कैन सी हियर इन सीहान सिंड्रोम एंड वी नो लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म को हम बेसिकली हम कहते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये मोस्टली अकर होता है मिडिल एज्ड फीमेल में एंड इसके कॉजेज़ हैं मेनली लाइक कॉमनली प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। एंड इसके कॉजेज़ और भी हैं, जैसे कि ये एसोसिएटेड होता है एसोसिएटेड विथ ऑटो इम्यून इलनेस, जैसे कि मैंने ऊपर बताया APS2 ये कैसे एडिसन डिजीज़ प्लस हाशिमोटो थायराइडाइटिस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, एडिशन disease and SLE and associated with also HLA, DR3, DR4 and DR5 and this also CTLA4 polymorphism. CTLA means cytotoxic T lymphocyte antigen 4 and it will also associated with increased risk of non-Hodgkin's lymphoma. As we know these non-Hodgkin's lymphoma they are B cells origins. इसकी पैथोजेनेसिस हम पढ़ लेंगे। तो पैथोजेनेसिस में आएगा थायराइड इपिथेलियम बिकॉज ऑफ सेल्फ टॉलरेंस एंड इंडक्शन ऑफ थायराइड ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कि बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन दिस विल अकर ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस एंड इंडक्शन ऑफ थायराइड ऑटो इम्यूनिटी एंड इट विल एक्टिवेट CD8 and CD4 and plasma cells. This CD8 or cytotoxic T cells this will activate direct killing or we know they are like cytotoxic cells. So these two cells mediated they will insert the thyroid epithelium and in CD4 it will activate the interferon gamma and interferon gamma we know that it will be responsible to activate the macrophages and macrophages can causes thyrocyte injury and in plasma cells it will activate anti-thyroid antibodies and these can be further causes antibody dependent cells mediated cytotoxicity. And in presentation in case we will see like because of two types like in decrease of BMR basal metabolic rate and increase of TSH there will be symptoms. So in because of decreased BMR we can see cold intolerance, severe kind of cold intolerance and constipation and menorrhagia and later it will be oligomenorrhea or amenorrhea and there will be weight gain, loss of hair and slowness of speech. Here we know the most important is cold intolerance, constipation and menorrhagia. And in increased TSH we can see TSH it will be bind to glycosaminoglycans and it will be trap a lot of water and increased TSH also stimulate the fibroblast and it will also increase the GAGs and because of this trapping of lots of water their symptoms is seen on the face. So we can see puffiness, periorbital edema, microglossia and non-pitting edema. In laboratory diagnosis is the most important. We can see like there will be increase of TSH and low FT4 like free T4. So here will be primary hypothyroidism. When there will be increased TSH and high FT4 there will be TSH adenomas or it will be resistance to thyroid hormone. And if there will be increased TSH and normal FT4 we can see subclinical hypothyroidism. And the last case we have decrease or normal TSH and low FT4 we can see secondary hypothyroidism.
So while providing treatment, we can see when diagnosis confirmed as primary hypothyroidism, how we can confirm the diagnosis. First is symptoms, like as we see earlier, symptoms is with like constipation, weight loss, or amenorrhea, and many others like puffiness. And second, we can see TSH high and free T3 and T4 low or normal. And third, we can see firm heterogeneous enlargement. And in fourth, antibodies like anti-TPO, anti-thyroid peroxidase antibodies. And we can prescribe a medicine like L-thyroxine for this hypothyroidism. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you.